To go. Okay, guys, we have with us Vice Captain Rishabh Pant. As usual, we'll take one question at a time. If you wish to ask a question, please raise your hand. Who wants to go first? Yes. Rishabh, from what we've seen so far, the coordination between you and Shubman, multiple times conversations, you going up, that seems extremely refreshing. Can you talk about the way the camaraderie is being built, how the team is coming together as a collective, the leadership group, you and Shubman? See, we feel, like I said before, also in PC, that when you have a good camaraderie of the field, I think it eventually shows on the field, and that is exactly what happened. What's happening? Because when two people trust each other, it's easier to do the same thing. The communication is better on the ground, and hopefully we can do the same thing with the whole team going forward and just make it a one big unit. ऋषभ इधर हाँ जी देश के लिए खेलते हो तो जिम्मेदारी तो होती है, लेकिन जब कप्तानी हो, उप कप्तानी हो, लीडर ऑफ द बॉलिंग पैक हो, बुमराह न हो जिनकी वजह से आकाश जी को, ये कभी कभी जिम्मेदारी अच्छी हो जाती है फोकस करने में। तो डेफिनेटली यही टाइम होता है जब आपको मौका मिलता है स्टेप अप करने का, लेवल अप करने का। ये अपॉर्चुनिटी होता है रादर देन यू सी इट एज अ सेटबैक कि हमारे मेन बॉलर नहीं है, बुमराह वॉज नॉट प्लेइंग बिकॉज ऑफ वर्कलोड मैनेजमेंट, बट स्टिल आकाशदीप स्टूड अप, सिराज स्टूड अप, एंड दैट इज़ वेरी नाइस टू सी कि ऐसे टाइम पे यही लेवल अप करके दिखाते हैं जब बॉलर, तो इवेंचुअली द टीम बिकम्स बेटर एंड बेटर। लेकिन आप और शुभमन बैटिंग के बारे में भी वो जिम्मेवारी काम आई। सी सर, ये तो हर इंडिविजुअल के लिए काम आती है, तो हमारे लिए भी काम आ रही है सर। ऋषभ, आकाशदीप ने मैच के बाद अपना एक पर्सनल बैटल के बारे में बोला स्टेप के साथ जो चल रहा है। ऑफ कोर्स दुनिया अभी उनके बॉलिंग के बारे में बात कर रही है, बट हम लोग कभी कभार इस ह्यूमन साइड को भूल जाते हैं। तो आप लोगों के बीच में क्या कुछ बातचीत हुई है, या आकाशदीप के साथ वो जो एक पर्सनल बैटल लड़ रहे हैं ग्राउंड में या ऑफ द फील्ड, क्या बातचीत रही है, कैसे वो मेंटली इस चीज़ से डील कर रहे हैं, और परफॉर्मेंस के टाइम पे परफॉर्मेंस ही दिए जा रहे हैं? सर मेनली यही है, अब मेरे को तो आईपीएल के टाइम पे पता था कि ये हो रहा है, तो बट कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि उनको पर्सनल रखे तो हमेशा बेटर रहता है। तो डेफिनेटली कॉन्वर्जेसन हुए हैं, बट द मोर यू कीप इट पर्सनल इट्स बेटर दैट वे। ऋषभ, ये टेस्ट मैच ऑफकोर्स 3 दिन पहले यू गाइस आर प्लेइंग ए टेस्ट मैच इन एडवांस्टन, और बहुत ही शॉर्ट टाइम है जो टेस्ट मैच के भी। तो आर यू इज दिस टीम ए बिग बिलीवर मोमेंटम? आपको लगता है कि मोमेंटम एक फैक्टर है? ऑब्वियसली इट्स अ न्यू गेम, बट क्या मोमेंटम एक फैक्टर होगा? See, definitely it's a short turnaround, but like you said, when you have a momentum in your side, you want that short turnaround. So we are not thinking about that too much. Yes, it's good for us to have a momentum, but still, eventually you gotta play the good cricket, and which team will play better will win eventually. Rishabh, have you got a chance to see the wicket yet? Because they have been talking about that there will be a little bit more of pace and movement there. Given the way your team has played on the last 2 pitches, do you think that you have managed to force them to deviate from their plans on playing flatter tracks to chase down bigger totals? Do you consider that as a win for you? See, as a team, generally what we plan is whatever the condition is given to us. See, we don't want to think about what the opposition is thinking. Are they changing their plan or not? Whatever they are doing, we'll do our best and do better from there. Simple. ऋषभ, जस्ट व्हाट अरुणी आस्क्ड, विकेट एक तो विकेट का, और दूसरा ये कि सेम टीम कॉम्बिनेशन के साथ जसप्रीत बुमराह का ऑलरेडी कैप्टन ने बता ही दिया, शुभमन ने, कि कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है कि कोई 3 फास्ट बॉलर्स और वॉशिंगटन एंड रविंद्र जडेजा? I think option is still open. I think discussion are still going on, but 3-1 होगा या 3-2 होगा, we'll get to know by tomorrow only. So discussions are going on, because what's happening when you see the wicket in 2 days, it's sometimes it changes the color, the moisture become less also. So we have to see the eventually take a call how the wicket is going to play. ऋषभ, लीड्स में जब हम सीरीज से पहले प्रीव्यू पीसी के लिए आए थे, तब
विकेट बहुत हरी थी, मैंने आपसे पूछा था तो आपने कहा था कि यहाँ पर हमें आदत है, पता है कि हरी विकेट मिलेगी, लेकिन पिछले 2 मुकाबलों में विकेट बिल्कुल हरी नहीं थी, ना पेस उस लेवल पर, ना बाउंस, ना स्विंग। तो कितने अमेज्ड हुए आप लोग, और क्या ये आप लोगों को फॉलो किया था आप लोगों ने पहले से कि इंग्लैंड जो है वो इस रणनीति पर अब खेलती है, अपनी बैटिंग को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती है, और उसको किस तरीके से काउंटर किया आप लोग? तो सी, यही बात हुई थी डिस्कशन की, विकेट अच्छे होंगे इंग्लैंड टूर पे, बिकॉज जैसे वो क्रिकेट खेलते हैं अपना, वो थोड़ा अच्छा विकेट ही चाहिए बैटिंग के लिए इवेंचुअली। तो हमारा यही था कि हम अच्छे विकेट में 20 विकेट कैसे निकाल सकते हैं। शुभमन भी बोल रहा था 20 विकेट के बारे में, वो इसलिए वो थॉट ऑलरेडी प्लान था कि इवेंचुअली बैटर्स हैव टू स्टेप अप, बिकॉज दो हमारे सीनियर बहुत बड़े प्लेयर नहीं हैं, बट हाउ लाइक आई सेड कि यही अपॉर्चुनिटी होती है स्टेप अप करने की, एंड पीपल आर डूइंग दैट स्लोली इवेंचुअली वी माइट डू बेटर एज अ टीम. You've kept a lot to Jasprit Bumrah. What makes him so special? I think everything. I think how accurate he is, the way his mind work, I think he's just amazing, man. And is that late movement that he gets, is that particularly difficult for a wicketkeeper? I think it's more difficult for the wicketkeeper behind the wicket than for a batsman, I guess, especially in England. Thank you. ऋषभ, अभी आपसे पहले बेन स्टोक्स ने एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज बोली कि जैसे बॉल्स आउट ऑफ शेप जा रही हैं बहुत ज़्यादा, उन्होंने कहा कि ये गेज जो है, जो रिंग्स हैं, वो ड्यूक्स के लिए स्पेशल अलग से होने चाहिए। आपको लगता है, मतलब उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा ये ड्यूक्स के लिए नहीं है, ये जो रिंग्स है, आपको लगता है कि ड्यूक्स बॉल्स के लिए शायद अलग गेज हो, कि उसकी थोड़ी शेप अलग है उसको टेस्ट करने के लिए? आई फील गेज सेम होना चाहिए, बट थोड़ा छोटा हो तो बेटर हो जाएगा. पर कितना तकलीफ दे रही है बॉल्स? See, definitely I feel it's a big problem because the ball is getting out of shape. But at the same time, it's not up to us, because visually when you see the ball, you can see it's D shape, but the rules are like such, until unless someone changes it, it's not up to the players. Rishabh, I think it could be fun watching you bat against Jofra Archer. Are you looking forward to it in this test match? See, personally, whenever I step on the field, I always enjoy my cricket and try to give my 200%. Not particularly about any individual, just being on the field. Yes, it's gonna be good contest always, because he's also coming back after a long break. Let's see how it goes. You pleased to see him? Yes, I'm happy he's back. Rishabh, some of your teammates, including Shubman, have worked with Brendan McCullum before in the IPL at KKR. Have you spoken to them at all about what he's like as a coach and how he might have influenced some of them, particularly Shubman? I think personally, I don't know as of now how personally he has influenced Shubman, but whenever you talk to Baz, he gives you that freedom always. The conversation he does is always positive, and as a coach, you want someone to have positive conversation and gives you good feedback. ऋषभ, अब कल शितांशु कोटक आए थे, उन्होंने कहा था कि आप हर इनिंग से पहले उनसे बहुत बैटिंग की बात करते हो, बट जब बीच में होते हो कम बातें करते हो, बट स्टंप माइक में आपकी खुद से बहुत बातें सुनाई दे रही हैं कि आप खुद को समझा रहे हो, सीधा खेल, शुभमन को बोल रहे हो सीधे बैट से ही खेलूंगा। तो कुछ चेंज किया आपने, या इन्होंने वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ा दिया है कि आपकी सारी बातें सुनाई देती हैं और बहुत खुद से आप बात कर करके एक ठहराव लाने की कोशिश कर रहे हो, बॉल छोड़ रहे हो जहाँ बशीर को आप मार सकते हो 6 में 4 तो आराम से, तो थोड़ा उस बारे में बताओ कैसे? नहीं, जनरली आइडिया ये रहता है कि कीप टॉकिंग टू योरसेल्फ एज अ बैट्समैन, बिकॉज वो बढ़ाया है क्या आपने इस बार थोड़ा? नहीं, हमेशा से ही बड़ा होता है, बट क्या है, स्टंप माइक में ज़्यादा सुनाई देता है तो आप लोगों को पता थोड़ा ज़्यादा हो जाता है कि कम्युनिकेशन नहीं होता ना बीच में। बट अपने लिए एज अ बैट्समैन आई थिंक मैं सेम चीज़ कर रहा हूँ जो मैं एज अ किड करता था, कीप टेलिंग माई सेल्फ, बिकॉज माई कोच यूज टू टेल मी कि कीप टॉकिंग टू यू। जो मेरे लेट श्री तारक सिन्हा सर थे, जो उन्होंने चीज़ें सिखाई हैं, आई स्टिल ट्राई टू डू द सेम थिंग ऑलवेज। Rishabh, I think this may have been asked already by Sid, but I didn't understand the answer in Hindi. So, do you think this series has had more balls go out of shape than the previous series that you've played in? And also, with regard to that, is it satisfactory that the ring that's used, the universal ring, should be used for both Dukes and Kookaburra balls in your opinion?
I think the ring can be the same for both the balls, but like you said, I think in this series, what I've seen, the ball is getting D-shaped too much. That has never happened like this too much. Is it irritating as players for it to be happening? It's definitely irritating for the players because every ball plays in different, because when it becomes softer, sometimes it's not doing too much, but as soon as they changes the ball, it started to do enough. So as a batsman, you got to keep on adjusting to it, but at the same time, I feel it's not good for cricket eventually. Yes, ma'am. Hi Rishabh. Yesterday, Kotak was saying that you're one of the players who tend to break the momentum of the opposition, and you've done that before in one of the finals in the World Cup. So, do you do something differently? Do you think about that, or you just play a natural game? Or do you have that in mind that I have to do something differently to break the opposition's momentum? See, for me personally, I try to have a very clear mindset when I'm batting. Just playing one ball at a time, that is something which has really helped me. But personally, when what other team is thinking, yes, I do have an idea what they want me to do, but eventually, you have to have that self discipline, how you're gonna counter it. You have to make your own plans and just play the game. Perfect. Thank you. Thank you very much.